Assalamualaikum. In this video lecture, we will be discussing some words of vocabulary. So let's start. Our first word for today is opted for. The phrase opted for means to choose or select something from among different options or alternatives. जब आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी होती है तो आप इसके लिए opt का वर्ड यूज़ करते हैं. For example, I decided to opt for the vegetarian option at the restaurant. जितने भी options है उसमें से मैंने vegetarian option choose किया तो इसलिए मैं इसके लिए opt का word यूज़ करूँगी. इसके synonyms हैं choose करना, select करना, elect करना, prefer करना. Antonyms includes reject, decline, refuse, dismiss, pass over or ignore. On the wrong foot. The phrase on the wrong foot. The phrase on the wrong foot means to start a relationship or situation with an initial mistake or misunderstanding. जब आप किसी भी काम का आगाज करते हैं और स्टार्ट में ही आप कोई गलत इनिशिएटिव ले लेते हैं या कोई गलती कर देते हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं तो उसलिए हम on the wrong foot यूज करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आई थिंक आई स्टार्टेड on the wrong foot when my boss with my boss by being late on the first day. जब आप काम के पहले दिन लेट हो गए हैं तो ऑब्वियसली आपने अपना जो काम है या आपका जो रिलेशनशिप है अपना बॉस के साथ वो आपने इनिशियल मिस्टेक के साथ ही स्टार्ट किया है तो इसके लिए ऑन द रॉन्ग फुट यूज होगा. इसके synonyms हैं off to a bad start, on the wrong track, ill at ease, awkward, uncomfortable, and easy. Antonyms होते हैं off to good start, on the right foot, comfortable, at ease. ओकेशनली का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा हैपनिंग हो या फिर जो है ना यूजली इस तरह हो कि वो डिफरेंट इरेगुलर इंटरवल्स पे हो रही है, मतलब कभी हो रही है कभी नहीं हो रही. ठीक है, उसमें कोई स्पेसिफिक सिमेट्री नहीं है. इसके एग्जांपल्स हैं ओकेशनली लुक लाइक टू हैव एन आइसक्रीम आफ्टर द डिनर. कभी कभार ये नहीं है कि इसका समटाइम्स का वर्ड यूज कर सकते हैं कि कभी कभार हमें ये चीज पसंद है या फिर रेगुलर इंटरवल्स पे आके काम करता है. Synonyms includes infrequent, sometimes, sporadically, periodically, now and then from time to time. Antonyms includes frequently, regularly, always, constantly, consistently. Operation basically refers to an activity performed by an individual or the group to achieve a specific goal, often involving a series of steps or procedures. For example, the medical operation was successful and the patient is recovering. ऑपरेशन किसी भी तरह से हो सकता है जो मेडिसिन में यूजुअली या फिर मेडिकल फील्ड में जो पेशेंट के ऊपर परफॉर्म किया जाता है उसको भी ऑपरेशन कहते हैं. इसी तरह जो है ना ये बेसिकली सीरीज ऑफ एक्शंस होते हैं. ठीक है, एक्शन गेम प्लान होता है कोई एक गोल अचीव करने के लिए जो आप करते हैं उसको ऑपरेशन कहते हैं. यूजुअली ये मिलिट्री ऑपरेशंस भी होते हैं. ठीक है, डिफरेंट एजेंसीज के ऑपरेशंस भी होते हैं. तो बेसिकली एग्जीक्यूशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ टास्क होती है. ठीक है, synonyms includes undertaking, processing, procedure, task, exercise, activity. Antonyms includes inaction, cessation, inactivity, discontinuance, halt, and stoppage. Plopped means to fall or drop heavily and with a dull sound. For example, she plopped down on the couch after a long day at the work. फ्लॉप यानी है कि जब आप बहुत ऐसे जैसे पानी का कतरा भी गिरता है तो उसको भी आप फ्लॉप कहते हैं. तो किसी चीज का गिरना, ठीक है, बहुत जल्द से साउंड प्रोड्यूस होना उसके साथ, तो उसके लिए हम फ्लॉप्ड का वर्ड यूज करते हैं. Synonyms includes dropped, plunked, thudded, banged, flopped, bounced. Antonyms includes lifted, raised, elevated, floated, hovered, suspended. Presume का basically मतलब होता है assume करना कुछ भी to be true without sufficient evidence or proof. ठीक है, किसी चीज को आप assume कर लें, ठीक है, फर्ज करने, उसके लिए आप presume का left यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I presume that the train is delayed due to heavy rain. ठीक है, ये मेरा अपना ख्याल है कि ट्रेन जो है वो डिले हो गई है. ठीक है, तो ये आपका एक ख्याल हो सकता है, आपका एक इजहार हो सकता है. ठीक है, ये इसका कोई प्रूफ या एविडेंस नहीं होता आपके पास. Synonyms includes assume, conjecture, speculate, suppose, and think. And antonyms includes know, prove, establish, demonstrate, attest, etc.
Precaution is an action taken in advance to prevent something dangerous, unpleasant, or inconvenient from happening. In ये जो preliminary इंतबा होती है उसको precaution कहते हैं. For example, the company took several precautions to ensure the safety of its workers. Synonyms and prevention: safeguard, measure, protect, security, care. Antonyms: carelessness, recklessness, inquisition, neglect, rashness, imprudence. So this is all for today. इंशाल्लाह ताला बाकी चीजें हम next video lecture में discuss करेंगे. Thank you so much. Allah Hafiz.